over our journey, we have come across some amazing women founders who are working on empowering women across various sectors. Bistro.pk works on entrepreneurship and financial inclusion. However, there are organizations such as Dot & Line, who is working in EdTech, Sehat Kahani, who is working in health tech, and Uran, that's working towards financially including and providing financial services to women across Pakistan. There's over 500,000 women in the region जो बहुत smart होती हैं, educated, graduates होती हैं, but as soon as they get married or have children, additional responsibilities होती हैं उनकी, and they stop work. And so Dot & Line की शुरुआत इसीलिए हुई थी that we wanted to provide all women with a flexible work from home opportunity, जहाँ से वो अपने घर से कमा सकें, अपनी responsibilities को देख कर कमा सकें. So Dot & Line is an online tutoring platform where we connect students from all over the world to our tutors, which enables them to earn from the comfort of their homes. The one thing that I have learned about the women of our Dot & Line teaching community is that they have such an incredible amount of ambition and grit. इतनी सारी औरतें होती हैं जो हमारे पास आती हैं जिनके पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होता ट्यूटरिंग में, बट वो इतने शौक और इतने मोटिवेशन के साथ अपने आप को आगे बढ़ाती हैं. दे आर ईगर टू लर्न एंड आई थिंक दैट ग्रिट इज़ द वन थिंग दैट आई टेक अवे फ्रॉम दैट, कि वो अपने आप को आगे पुश करती जाती हैं. और अगर आज आप उनको देखें, they are financially independent, they're earning from the comfort of their home, and that's really a big milestone. So I think communities like Bechlo and Dot & Line really put women at the center and the focus, which I think is so important. I also feel like flexible work for women is very important. आज के दौर में जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमें ये देखना ज़रूरी है दैट हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, घर की चीज़ों को देखकर एक फ्लेक्सिबल वर्क अपॉर्चुनिटी हम औरतों को मिलनी चाहिए जहाँ पे उनकी और एरियाज सफ़र नहीं कर रहे. So I really feel like both these companies really amplify women's growth and success in this manner. My message for women in general would be prioritize yourself. अपने आप को आप एक उस नज़रिए से देखें जहाँ आप अपने आप को एक अच्छी नज़र से देख रही हैं. I think that's very important for all women to succeed in life. Look at yourself, prioritize yourself, think of what you want to do, think of what helps you grow in areas, and give yourself the time that you need. जितनी ज़्यादा ख़वातीन बिजनेस सेक्टर में एंटर होंगी, उनके लिए पॉलिसीज़ बनेंगी और पाकिस्तान की माशी हालात को बेहतर करने में वो एक ड्राइविंग फोर्स बन सकती हैं.